आज हम फॉर लूप का यूज़ करते हुए किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कैसे निकाला जाता है उस पर एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं। फॉर लूप का सिंटेक्स है फॉर, उसके बाद क्या है, इनिशियलाइजेशन है यहाँ पे, सेमीकोलन, उसके बाद कंडीशन, जो कंडीशन चेक होती है, उसके बाद है सेमीकोलन, फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, जो भी हम कंडीशन अप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंगली रहेगा। और ये रहेगा फॉर लूप ब्लॉक, जिसमें कि फॉर लूप के लिए कोड लिखेंगे जिसका कि रिपीटेशन होना है। चलिए, तो HTML स्टार्ट होता है, फिर हेड टैग यूज़ करेंगे। इसके अंदर हम टाइटल टैग यूज़ करते हैं टू डिस्प्ले द टाइटल ऑफ द पेज। So this is for loop demo, and title tag, then in head tag, close, then open body tag, close body tag, close HTML tag. Inside the body tag we write a script to compute factorial of a number. So for that we have to declare a variable that is initialization for multiplication, and another variable that is number. Let we consider this number as a 7, for which we are going to calculate factorial, and another variable that is I, which is used to run for loop. For I is initialized by 1, then I condition is equals to less or equals to num, which the value will be raised to number, for which we are going to calculate factorial. Then increment, then statement, here we are going to calculate factorial. So factorial equals to factorial multiplied by I. So why we use factorial in the right side? Because whenever we are talking about the multiplication, the value which is going to calculate, it should not be 0 in the case of multiplication, because the multiplication of 1 is not changing the value of multipliers. So right now we are going to display the result of this for operation, that is the factorial of a given
number is the value which is stored in the fact after the execution of final execution of for. To get the results of this code, we just go to the browser and see the result. Okay, this is result after the execution of the written code. Here we are going to calculate the factorial of 7, and that is 5040. That's it.